हाँ ठीक है। Hello everyone. I hope you all are doing very well. So in today's session, we are going to discuss judgments important for upcoming CLAT PG examination from the subject Arbitration Act. All right. So as you all know, कल ALET का exam है. Whosoever is appearing in ALET PG, I wish you all the best. Keep calm, stay calm, and do not think कि आपको कुछ नहीं आता है. आपने बहुत पढ़ाई की है, आपको बहुत कुछ आता है, and you are going to come back with flying colors. All right. Now, first judgment here on your screen is Mahindra and Mahindra Financial Service Limited versus Mahesh Bhai, Tina Bhai Rathor. ठीक है? This was decided by good evening, Dhurjati. Good evening, Jayant. This was decided by the then Chief Justice N.V. Ramanna and Justice A.S. Bopanna and Justice Hema Kohli. Now, in this particular case law, the question before the apex court was whether the delay in condonable, the delay is condonable by exercise of power under Section 5 of Limitation Act. Now, you all know Section number 5 of Limitation Act talks about condonation of delay. ठीक है? And ये वहां लगता है जब किसी रिस्पेक्टिव एक्ट में उसके कॉन्डोनेशन की बात किसी रिस्पेक्टिव प्रोविजन के साथ नहीं दी होती है. All right? Yes, it will be available, Jayant. All right? Now, so when you will see Arbitration and Conciliation Act 1996, all right, Section 34, Clause 3 of Arbitration and Conciliation Act provides that an application for setting aside may not be made after 3 months have elapsed from the date on which the party making that application had received the arbitral award. That shows that in the respective act, जो टाइम लिमिट है, जो लिमिटेशन है, वो प्रोवाइडेड है. ऑलराइट. सो लेट्स सी सेक्शन नंबर 34 क्लॉज 3 की एक्चुअल डायरेक्ट लैंग्वेज विच सेज एन एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड मे नॉट बी मेड. एक एप्लीकेशन सेट असाइड करने की नहीं बनाई जा सकती है अगर 3 months have elapsed from what? From the date on which the party making that application had received the arbitral award. जिस दिन उस पार्टी ने जो arbitral award जिसको मिला है, ठीक है, जिस दिन उसने मेकिंग दैट एप्लीकेशन जिस दिन उसने आर्बिट्रल अवार्ड को रिसीव किया है, ठीक है, वहां से लेके, ठीक है, और इफ अ रिक्वेस्ट हैड बीन मेड under section 33 from the date on which that request had been disposed of by the arbitral tribunal. तो यहाँ पे दो conditions है, या तो 34 में उसे जो from the date on which the party meaning the application had received the arbitral award, या तो उसे arbitral award मिल गया हो, या अगर उसने 33 में कोई रिक्वेस्ट की है तो जिस दिन वो रिक्वेस्ट डिस्पोज ऑफ हो जाती है ट्राइब्यूनल से, ठीक है, तो उसके बाद 3 महीने का, उसके बाद 3 months का आपको टाइम पीरियड मिलता है. नाउ हियर देयर इज अ प्रोवाइजो अटैच्ड. yes, it is important for CLAT PG, Deepak, provided that, and this particular class is for CLAT PG only, there this is important for ALET as well, provided that if the court is satisfied that the applicant was prevented by sufficient cause from making the application within the set period of 3 months, ठीक है, it may extend the application within a further period of 30 days but not thereafter. Now understand, this proviso itself is talking about condonation of delay. General जो टाइमिंग दी गई है that is for 3 months, and अगर आप किसी genuine reason की वजह से, ठीक है, sufficient cause की वजह से अगर आप लाइक डिले हो जाता है, ठीक है,
जो कि एप्लीकेंट के हाथ में नहीं था प्रिवेंट करना, तो आपको 30 days का और टाइम मिल सकता है। ऑलराइट, नाउ गो बैक ऑन आवर केस। यहाँ पे द इशू वाज कि क्योंकि सेक्शन 34(3) में कॉन्डोनेशन दे रखा है, तो जो सेक्शन 5 का कॉन्डोनेशन है, सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट का, क्या वहां वो यहाँ एप्लीकेबल होगा? ठीक है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इन द केस ऑफ महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड वर्सेस महेश भाई तीना भाई राठौर, ये कहा कि द स्कोप अवेलेबल फॉर condonation of delay being self-contained in proviso to section 34 clause 3 of section 5 of the limitation act, and therefore section 5 won't be applicable on the same. All right, I hope आप सबको ये particular case law समझ आया, and section 34 clause 3 क्या कहता है वो भी समझ आया। in case CLAT PG में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है from section 34 clause 3 about the time period, about the limitation, all right, for filing the application for setting aside the arbitral award, या उसी में जो प्रोवाइजो है वहां पे क्या ड्यूरेशन दिया हुआ है, तो आपको याद रहेगा द इनिशियल ड्यूरेशन इज 3 month एंड उसे 30 दिनों का और कॉन्टिन्यूशन किया जा सकता है। ऑल राइट, आई होप आपको समझ आ गया। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी द नेक्स्ट केस लॉ ऑफ द डे। मीनवाइल Meanwhile, whosoever is just give me a thumbs up if anyone who is appearing in tomorrow's A8 PG examination is watching this video right now. All right. Now, the next case law here is Atlanta Limited through its managing director versus Union of India, represented by Chief Engineer Military Engineering Services. Now, this case was decided by the then Chief Justice N.V. Ramanna, A.S. Bopanna, and Justice Hima Kohli again. Now, यहाँ पे, all right, Suresh, यहाँ पे there was a contention related with section number 30 and 33 of Arbitration Act 1940. Now, understand, court reiterated that the appellate court exercising power under section 30 and 33 oath not to reassess। ठीक है, जब कोर्ट अपनी पावर्स 30 एंड 33 में यूज कर रहा है, तो वो रीअसेस नहीं करेगा या रीअप्रिशिएट नहीं करेगा एविडेंसेस को। ठीक है, और एग्जामिन द सफिशिएंसी ऑफ एविडेंस, तो इस स्टेज पे कोर्ट जो है वो एग्जामिन नहीं करेगा सफिशिएंसी ऑफ एविडेंस। ऑल राइट, नाउ द एपिक्स कोर्ट also held that the arbitral award, ought not to be challenged on the ground that the arbitrator had drawn his own conclusion or had failed to appreciate the fact. Now, यहाँ पे दो बातें कही जा रही हैं। पहला कि सेक्शन 30 एंड 33 की जो पावर्स हैं उनको यूज करते हुए जो अपीलेट कोर्ट है वो एविडेंसेस को एग्जामिन नहीं करेगा, रीअसेस नहीं करेगा, ये चेक नहीं करेगा कि जो एविडेंसेस थे वो सफिशिएंट थे या नहीं। दूसरी बात जो यहाँ पे कही जा रही है, दैट इज द एपेक्स कोर्ट आल्सो हेल्ड दैट कि जो आर्बिट्रल अवार्ड है, ठीक है, उसे सिर्फ इस ग्राउंड पे चैलेंज नहीं किया जाएगा कि जो आर्बिट्रेटर है, ठीक है, उसने जो कंक्लूजन ड्रॉ किया है, had drawn his own conclusion, या वो किसी फैक्ट को अप्रिशिएट नहीं कर पाया, तो इस ग्राउंड पे उसे चैलेंज नहीं किया जाएगा। सुमेधा Bhattacharjee is saying, good evening, ma'am. It's a request. Could you come up with a video related to recent development in public international law? We will try to make the same. All right. Now, यहाँ पे जो अभी करंट का आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट है उसका सेक्शन 30 एंड 33 मेंशन है। करेंट जो आर्बिट्रेशन एक्ट है उसका सेक्शन 30 सेटलमेंट की बात करता है। ये कहता है इट इज नॉट incompatible with an arbitration agreement for an arbitral tribunal to encourage settlement of dispute, and with the agreement of the parties the arbitral tribunal may use mediation, conciliation or other proceedings at any time during the arbitral proceeding to encourage the settlement। ठीक है, इसी का क्लॉज 2 कहता है कि इफ ड्यूरिंग आर्बिट्रल प्रोसीडिंग, ठीक है, आर्बिट्रल प्रोसीडिंग के दौरान अगर द पार्टी सेटल द डिस्प्यूट, ठीक है,
the arbitral tribunal shall terminate the proceedings. ठीक है? And if requested by the parties and not objected by the tribunal, record the settlement in form of an arbitral award on agreed terms. All right? यहाँ से भी इस पॉइंट से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बना लिए जाते हैं. Now, next point यहाँ कहता है कि an arbitral award on agreed terms shall be made in accordance with section 31 and shall state that it in arbitral award. तो arbitral award हमेशा section 31 के consonants में बनाया जाता है. Arbitral award on agreed terms shall have the same status. उसका status क्या होगा? Same status होगा, same effect होगा as any other arbitral award on substance of the dispute. All right. Now, section 33 जो बात करता है correction and interpretation of arbitral award की, इसको भी एक बार देख लेते हैं because these are the sections जहाँ पे आपके आने वाले CLAT PG में questions बनाए जा सकते हैं. All right. तो ये कहता है कि विद इन 30 डेज, तो यू ऑल नो जहां पे भी ये ड्यूरेशन और लिमिट दी होती है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए. विद इन 30 डेज फ्रॉम द रिसीट ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड अनलेस अनदर पीरियड ऑफ टाइम हैज बीन अग्रीड अपॉन बाय द पार्टीज. अब पार्टी, ठीक है, पार्टी क्या करेगी 30 डेज में? विद नोटिस टू एनी to the other party request the arbitral tribunal to correct any computation error or any clerical or typographical error or any other error of similar nature occurring in the award. Now यहाँ से multiple choice questions generally बना लिए जाते हैं कि what is the time period given here for filing the same, for the correction, for clerical or typographical error. या दूसरा जो multiple choice question यहाँ से बन सकता है that is about error. कौन कौन से टाइप की यहाँ पे error की corrections की application बनाई जा सकती है. All right. Next is if so agreed by the parties, a party with notice to other party may request the arbitral tribunal to give an interpretation of specific point or part of the award. Now this is very important. ये important point है. यहाँ से भी आपके multiple choice questions बनाए जा सकते हैं. If so agreed by the party, ये जो पार्टी है, ठीक है, दूसरे पार्टी को नोटिस देके, ठीक है, रिक्वेस्ट कर सकती है ट्राइब्यूनल को कि वो किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट का इंटरप्रिटेशन दें. ऑल राइट. नाउ बाकी पॉइंट्स आप खुद पढ़ लीजिएगा. आई बिलीव आप सबके पास आर्बिट्रेशन एक्ट का बेयर एक्ट है. वी आर मूविंग फॉरवर्ड एंड सीइंग द नेक्स्ट जजमेंट ऑफ द डे, that is Indian Oil Corporation Limited versus Sri Ganesh Petroleum Rajguru Naga, decided by Justice Indra Banerjee and Justice Abhay S. Oka. All right. Here, it was held that an award can be said to be patently illegal where the tribunal has failed to act in terms of a contract or has ignored the specific terms of a contract. Now you all know Arbitration Act में जो दोनों पार्टी की म्यूचुअल जो डिसीजन होता है, जो दोनों पार्टी म्यूचुअली अग्री करती है, उससे हर एक चीज चलती है. तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि कोई भी जो अवार्ड आया है आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल का, उसे कहा जाएगा कि वो पेटेंटली इलीगल है अगर वो जो आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल है वो फेल कर जाती है जो भी कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स हैं उन पे एक्ट करने के लिए, या फेल कर जाती है किसी स्पेसिफिक टर्म को इग्नोर कर देती है, उसको फॉलो नहीं कर पाती है. ऑल राइट. नाउ an arbitral tribunal being a creature of contract is bound to act in the terms of the contract as I mentioned here, under which it is constituted. An award can be said to be patently illegal where the arbitral tribunal has failed to act in terms of a contract or has ignored the specific term of a contract. This you have to remember that this was held. The patent illegality of arbitral award, if it is not in consonance with the contract on which it is made, is held in the case of Indian Oil Corporation Limited versus Sri Ganesh Petroleum Rajguru Naga. All right. Next case of the day is Dr. A. Parthasari versus E. Springs Avenues Private Limited, decided by Justice M.R. Shah and Justice B.V. Nagaratha. Now here, Supreme Court observed that Section 37 of Arbitration and Conciliation Act has no jurisdiction. Section 37 में कोई jurisdiction नहीं है
to remand the matter to same arbitrator, ठीक है, कि जो सेम आर्बिट्रेटर है उसको मैटर रिमांड किया जाए, अनलेस कब तक नहीं है जुरिस्डिक्शन, इट इज सो कंसेंटेड बाय बोथ द पार्टीज, मतलब अगर दोनों पार्टी कंसेंट कर लें तो ऐसा किया जा सकता है कि सेम आर्बिट्रेटर को मैटर को रिमांड कर दिया जाए। हाउएवर अगर ऐसा ना हो, दोनों पार्टी अग्री ना करें, तो ऐसा नहीं किया जा सकता। नाउ लेट्स सी the bench the bench that only two options are available to the court considering the appeal under section 37 of arbitration act, the high court either may relegate the parties for fresh arbitration or to consider appeal on merits। तो दो ही ऑप्शन है, ठीक है, बेंच के पास दो ही ऑप्शन है कोर्ट के पास अवेलेबल अपील कंसिडर करते वक्त अंडर सेक्शन 37। पहला कि वो पार्टीज को बोले कि फ्रेश आर्बिट्रेशन में चले जाओ, या जो भी अपील है उसे मेरिट्स पे डिसाइड करे, ठीक है। मटेरियल अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड within the scope and ambit of jurisdiction under section 37 of arbitration and conciliation act, ठीक है। this was decided in the case of Dr. A Parthasarthi, all right। Now uh, next is Ravi Ranjan Developer Private Limited versus Aditya Kumar Chatterjee, decided by Justice Indra Banerjee and A.S. Bhupanna. Now, in this case, Supreme Court observed that an application under Section 11 Clause 6 of Arbitration and Conciliation Act, अब 11 clause 6 की जो एप्लीकेशन होती है दैट इज फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एन आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल, ठीक है, सेक्शन 11 इसी की बात करता है, कैन नॉट बी मूव्ड इन हाई कोर्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, मतलब सेक्शन 11 की एप्लीकेशन जो है वो हाई कोर्ट में नहीं जा सकती। ऑल राइट, नाउ बिफोर रीडिंग दिस लेट्स सी सेक्शन 11 clause 6। section 11 clause 6 कहता है कि where under an appointment procedure agreed upon the parties, a party fails to act as required under that procedure, or the parties or two appointed arbitrator fails to reach an agreement expected of them under the procedure, और जो पर्सन है, ठीक है, वो इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, अगर वो फेल करता है अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, then a party may request the Supreme Court, or as the case may be, the High Court, or any person or institution designed by such court. Now, ये amendment से जोड़ा गया था to make the necessary measures unless the agreement on the appointment procedure provided other than for securing the appointment. Now, understand यहाँ पे क्या कह रहा है, to take the necessary measures, ठीक है, unless the agreement on the appointment procedure provided other means for securing the appointment, अगर कोई other means दे रखे हैं, ठीक है, अगर कोई other means हैं, then that case आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकते। Now यहाँ पे दिया गया it could never have been intention of section 11 clause 6 of Arbitration and Conciliation Act that the arbitration proceeding should be initiated in any high court in India. Now 11.6 में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है या कहीं नहीं ऐड किया गया है कि, या इसका इंटेंशन ये कभी नहीं था कि आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग हाई कोर्ट में इनिशिएटेड हो जाए, irrespective of whether the respondent resided or carried out the business in the jurisdiction of the high court, and irrespective of whether any party or the cause of action arose in the jurisdiction of that court to put an opponent at disadvantage and steal march over the opponent. Now understand इस particular case में कहा क्या क्या गया, इस particular case में ये कहा गया कि section 11 clause 6 जो है for appointment of an arbitrator cannot be moved, ठीक है, इस सेक्शन में आप हाई कोर्ट के पास जाके ये नहीं कह सकते कि अब यहाँ पे हमारा आर्बिट्रेशन का एक्ट में आर्बिट्रेशन केस जो आर्बिट्रेशन का मैटर है वो अब चलेगा। ऑल राइट, नाउ इसको एक बार और अच्छे से डीपली इस पूरे केस को पढ़ लेना, दिस इज अ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट इज थ्रू Pati Steels versus Subindustrial component decided by Justice M.R. Shah and Justice B.V. Nagaratna. Here Supreme Court observed that जो pre-deposit है of 75% of the awarded amount as per section 19 of Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006 वो mandatory है, ठीक है, वो mandatory है,
चैलेंज करने के लिए अवार्ड को अंडर सेक्शन 34 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट। सेक्शन 34 में आप सेटिंग असाइड द आर्बिट्रल अवार्ड में जाते हो, चैलेंज करते हो, सो सेट असाइड करवाने के लिए। ऐसा करने के लिए आपको एज पर सेक्शन 19 75% प्री डिपॉजिट देना जरूरी है, ठीक है, एज पर सेक्शन 19 ऑफ एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006। ऑलराइट, नाउ यहाँ पे आपको नेक्स्ट सेक्शन यहाँ पे 19 आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट का मेंशन है। अगर आपको सेक्शन 19 पढ़ना हो तो आप यहाँ पे स्लाइड पॉज करके पढ़ सकते हैं। नाउ अंडरस्टैंड व्हाई आई इनकॉर्पोरेटेड दीज सेक्शंस, ताकि बीच बीच में आप इन सेक्शंस को भी कवर कर लें, एज आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट को रेगुलर बेसिस पे कोई भी नहीं पढ़ता है। नाउ नेक्स्ट इज एवरग्रीन लैंडमार्क प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस जॉन टिन्सन एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स, डिसाइडेड बाय जस्टिस एम.आर. शाह and Justice V.P. Nagarata. In this particular case, Supreme Court held that arbitral tribunal cannot pass an order by way of interim measure. ठीक है, सेक्शन 17 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 टॉक्स अबाउट इंटरिम मेजर। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ट्राइब्यूनल है वो ऑर्डर पास नहीं कर सकती है सेक्शन 17 में इंटरिम मेजर के जैसे। किस चीज का ऑर्डर? टू डिपॉजिट द अमाउंट इन्वॉल्व इन द डिस्प्यूट, to deposit the amount involved in the dispute in case where the liability to pay such an amount is seriously disputed and same is yet to be adjudicated upon by the tribunal. All right, I hope you understood this thing. And section 17 interim measure ordered by arbitral tribunal की बात करता है, इसको भी एक बार पढ़ लेना। जनरली सेक्शन 17 में क्या दिया हुआ है ये भी पूछ लिया जाता है, तो ऑलवेज रिमेंबर दैट सेक्शन 17 of arbitration and conciliation act talks about interim measures. Next case law here is Oil and Natural Gas Corporation Limited versus Discovery Enterprises Private Limited, decided by Justice D.Y. Chandrachud, Suryakant and Vikram Nath. Now, understand, हमने लास्ट जो हमने लेक्चर लिया था, जो मैंने लेक्चर लिया था लास्ट क्लास में, वी डिस्कस्ड ऑन वाईटी ओनली कॉन्सेप्ट अबाउट ग्रुप ऑफ कंपनीज। ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग द केस वाज रिलेटेड टू कॉक्स। ठीक है, इसका ऐसा कुछ नाम था वहां पे। ग्रुप ऑफ कंपनीज का डॉक्ट्रिन भी हमने पढ़ा था, उसी ग्रुप ऑफ कंपनी डॉक्ट्रिन से रिलेटेड ये पर्टिकुलर केस है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस डिस्कवरी एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड। इज इन दिस पर्टिकुलर केस Supreme Court delivered a judgment explaining group of companies doctrine. अब group of company doctrines क्या postulate करता है? It postulates that an arbitration agreement entered into by a company within a group of company can bind, ठीक है, can bind its non-signatory affiliates or its sister concern if the circumstances demonstrate a mutual intention of the parties to bind both the signatories and affiliated non-signatory parties. All right, तो अगर एक कंपनी ने कुछ साइन किया है तो उसकी जो सिस्टर कंसर्न्स होंगी या उसकी नॉन सिग्नेटरीज जो एफिलिएट्स हैं वो भी कब बाइंड होंगी उस आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट से, ये ग्रुप ऑफ कंपनीज डॉक्ट्रिन बताता है। जबकि अभी लेटेस्ट केस के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने इस डॉक्ट्रिन को रिकंसिडर करने को कहा है। नाउ the court observed that non-signatory may be bound by the arbitration agreement where, तो इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जो नॉन सिग्नेटरीज कंपनी है वो कौन कौन सी कंडीशंस फुलफिल होने पे वो बाउंड होंगी। पहला, जब देयर एग्जिस्ट अ ग्रुप ऑफ कंपनीज, ठीक है, पहला की ग्रुप ऑफ कंपनीज होनी चाहिए। दूसरा, पार्टीज हैव एंगेज्ड इन कंडक्ट और मेड स्टेटमेंट इंडिकेटिंग एन इंटेंशन टू बाइंड अ नॉन सिग्नेटरी, इंटेंशन होना चाहिए। एंड यहाँ पे ये भी बताया गया कि द बेंच held that the following factors have to be considered to apply the doctrine. पहला, कि जो म्यूचुअल इंटेंट होना चाहिए पार्टीज का कि ग्रुप ऑफ कंपनीज डॉक्ट्रिन लग रहा है। दूसरा, जो रिलेशनशिप है नॉन सिग्नेटरीज टू अ पार्टी विच अ सिग्नेटरी टू एन अग्रीमेंट, उनका रिलेशनशिप होना चाहिए। कॉमनैलिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए। कंपोजिट नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन होना चाहिए। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। ऑलराइट, सो यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर कि ये पर्टिकुलर केस भी ग्रुप ऑफ कंपनीज डॉक्ट्रिन से रिलेट करता है। नेक्स्ट इज Delhi Airport Metro Express Private Limited versus Delhi Metro Rail Corporation. Now, this case was decided by Justice L. Nageshwar Rao and Justice B.R. Gavai. Supreme Court in this particular judgment held that the power of arbitral tribunal to award interest is subject to
agreement between the parties to the contrary. Now understand, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल का पावर है आर्बिट्रल इंटरेस्ट देने का, वो अग्रीमेंट से it should be in consonance or it should be subject to the agreement. The court held that ट्राइब्यूनल कैन नॉट अवॉर्ड इंटरेस्ट, जो ट्राइब्यूनल है वो इंटरेस्ट अवॉर्ड नहीं कर सकती इफ द पार्टीज हैव अग्रीड अदरवाइज। तो जो भी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगी वो हमेशा in consonance of the arbitral agreement होना चाहिए. It cannot be in contradiction to the arbitral agreement जो parties ने जो terms and condition decide किया है. Here division bench of the Supreme Court held that when the parties have an agreement between themselves that governs the issue of interest, the arbitrator would lose its discretion. So you all know that arbitrator के पास discretionary power होती है, लेकिन उसका जो discretionary power है वो ओवररूल नहीं कर सकता उस अग्रीमेंट को जो पार्टीज ने डिसाइड किया है, एंड विल बी गाइडेड बाय द अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। एंड जो आर्बिट्रेटर है वो always guide होगा by the agreement between the parties. I hope you understood these all case laws. I know Arbitration Act itself is not that uh, that interesting, but believe me अगर इसके केस लॉस पढ़ते जाओगे तो ये काफी इंटरेस्टिंग लगने लग जाएगा। श्रेया सोंधी is saying, ma'am, what about ma'am, what all will be discussed in masterclass? Please give a brief. So in masterclass we will be discussing the case laws, all right, the case laws, and we will be uh, discussing the expected questions. We will make you solve questions, different case laws, different topics, a lot of things. All right. So basically, जो लास्ट टाइम में आपको रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए, ठीक है, लास्ट टाइम में आपको जो चीजें रिवाइज कराना चाहिए वो हम आपको कराएंगे, जो लाइक प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराने चाहिए वो हम आपको कराएंगे इन मास्टर क्लासेस। ऑलराइट, I hope that you like the video. If you like the video, just press the like button and keep studying. All the best for your A-Let PG examination. Stay tuned. मिलते हैं next class में. भूमिका इंदौरी signing off.